सर ऑडियो म्यूट हो रहा है आपका। Okay, GZ curve is also known as curve of statical stability. Is also known as moment of statical stability curve. So whether we are talking about GZ curve or we are talking about COS, curve of statical stability, or we are talking about MOS, stability, we're talking about the same thing. सर MOSS क्या बोला आपने? Moment of statical stability. Moment of statical stability. So these are the three same things. और सर COSS का क्या मतलब है? Curve of statical stability. Curve of statical stability. Moment of statical stability. Okay. A GZ curve is drawn with theta as the angle of heel along the x-axis. In degrees. And corrected GZ in meters along the y-axis. Corrected GZ in meters along the y-axis. So if the graduations along the x-axis are 10, 20, 30, after 30 it becomes 45, 50-degree interval, 60, then 75. That means till 30 they remain at 10-degree interval. Beyond 30 they become at 15-degree interval. And the values along the y-axis could be random. So randomly I'm taking some values at intervals of 0.25 meters. And a GZ curve an ideal GZ curve resembles a bell. So it's called as a bell-shaped curve. सर ये आपने थीटा के नीचे क्या लिखा है? Heel, angle of heel. ओके, और सर GZ के ऊपर क्या लिखा है? GZ के ऊपर Corrected. करेक्ट. Corrected GZ in meters. So this curve is drawn on every departure port. On every departure port. From the lodicator. And a printout is sent to the charterer, to the ship owner,
and one copy is retained for the ship's file. A GZ curve displacement of the vessel and or kg of the vessel. So if any one of these things change, if the displacement changes or the kg of the vessel changes, the GZ curve will change. Specific. It's condition specific. It's unique to the condition. What info do we obtain from GZ curve? First one, GZ max, the maximum GZ. This is the GZ max. Of the vessel. That means the maximum value of GZ that is attained. So it starts from 0, reaches the maximum, becomes 0. So the maximum value is called as the GZ max. Second, angle of heel at GZ max. Angle of heel at GZ max, drop a perpendicular down from the max GZ value where it hits the x-axis will give you the angle of heel at GZ max. For our kind of ships, merchant ships, this value will be anywhere around 45 degrees. Can be 43, can be 46. But I don't have any provisions to calculate at 43 or 44. So that's why we normally take it as an approximate value of 45 degrees. Angle of vanishing stability. Angle of vanishing stability
is this angle. This is angle of vanishing stability. So approximately, let us say it is 80 degrees for the diagram that I have drawn. सर कौन सा एंगल, मतलब जो नीचे टच होगा एंड में, या फिर वो जो आपके एरो के साथ बन रहा है? वही है, दैट इज द एंगल ऑन द एक्स एक्सिस, जहां पे कर्व काट रहा है उसको. So we observe that the GZ value is initially at 0, then it becomes maximum, then it becomes 0 again. So angle of vanishing stability is that angle of heel at which the GZ becomes 0 again. That angle of heel at which the GZ becomes 0 again, दोबारा 0 हो जाता है. That is known as angle of vanishing stability. That means the vessel has lost its ability to come back. It will no longer be able to come back from this condition. The writing lever has become 0. सर ये 80 डिग्री मर्चेंट शिप्स के लिए है, मतलब एक कॉमन वैल्यू? नहीं, ये अप्रोक्सीमेट मैंने लिखा है कि हर जहाज की अपनी अपनी यूनिक वैल्यू होगी, उस कंडीशन की होगी. ये दिस इज लाइक आई सेड कंडीशन स्पेसिफिक. सो हर जहाज की अपनी अपनी वैल्यू होगी. बैलेस्ट में कुछ और होगी, लोडेड में कुछ और होगी. So each vessel will have its own value at each condition. Cannot be a constant value. Next, range of positive stability, ROPS. Range of positive stability. This is range of positive stability is equal to angle of vanishing stability minus angle at point of origin. And vanishing stability minus angle at point of origin. So in the diagram that I am showing you, point of origin is 0. So therefore it will be 80 minus 0 is equal to 80 degrees. But in some other case, the point of origin would be 10. In which case then it will be 80 minus 10. 70. That is 70. That will be the range of positive stability. Fifth point. Initial GM. Initial GM. So
So we first erect a perpendicular from a fixed value 57.3 degrees on the x-axis. So 57.3 degrees पे एक परपेंडिकुलर इरेक्ट किया. ये कांस्टेंट वैल्यू है 57.3 डिग्री. फिर पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी. ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे ये कर्व ऐसे लिप बना रहा है. इट्स कॉन्केविंग अप. सो अ टेंजेंट इज ड्रॉन to the curve at the point of origin. The place where the tangent and the perpendicular they meet, you go left. Wherever it hits, it connects to the y-axis. Supposing this is 0.60, then that will give you the approximate value of initial GM. That is the approximate value of initial GM. I'll repeat this once again. At a fixed value 57.3 degrees, you erect a perpendicular. Then at the point of origin to the curve, you draw a tangent. Wherever the tangent and the perpendicular they meet, you go left. Wherever it hits the y-axis, that will give you the value of initial GM. This value of 57.3 is taken because this is in meters, this is in degrees. You can't compare meter with degrees. So you need to convert the degree to radian. So therefore, we know 360 degrees is equal to 2 pi radian. Or 1 radian is equal to 57.3 degrees. So we are taking one value of 1 radian, and wherever that tangent is meeting with the value of 1 radian, whatever is the corresponding value of on the GZ axis, that is on the Y axis, you will get a value of the initial GM. And from here, there's one more value which you can get, and that is 1 degree is equal to 1 upon 57.3 रेडियन. एक फॉर्मूला और बन जाता है. हाँ जी, एनी डाउट सो फार? Okay.
Sir, for this ZZ Max, is it 45 is a constant value or it changes accordingly as per Like the ship, sir? it'll change, all these values will change as per the ship. ये तो मैंने खाली आपको ये Okay, sir. अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, मैं तो सारी ये वैल्यूज जो रैंडम ले रहा हूँ, सारी आपकी बदलेंगी जहाज पे. It will be Okay, sir. Okay. dependent. It will depend on the ship. It will depend on the condition of the ship. Loaded, partially loaded, fully loaded. वो सारी मैंने आपको लिख दी, कंडीशन स्पेसिफिक लिख दिया है. तो ये हर ये बदलेगी. मैं तो खाली यहाँ पे रैंडम वैल्यूज ले रहा हूँ. Okay, sir. Okay. Point number 6. Writing moment. Writing moment at a particular theta is equal to displacement into writing lever at that theta. So units of this will be ton meter. So if I want writing moment at, let's say, 20 degrees, and my vessel is a 50,000 tonner. So 50,000 tons multiplied by, at 20 degrees you erect a perpendicular. जहाँ पे इसने काटा कर्व को, you go left. Supposing वो वैल्यू आती है 0.5. So many ton meter. That is the writing moment of the vessel for 20 degrees. That is the value of writing moment. So you obtain a writing moment from the curve. Seven. Area under the curve. Area under the curve or various thetas can be computed using Simpson's rules. And the areas can then be calculated. Because you've got degrees over here, you will need to convert the degree to radian by dividing the value by 57.3 degrees, by dividing by 57.3, and then you will get your value in radian. This will be in meter, this will be in radian. So the value of this will become meter radian. And the last one is something called as dynamical stability. Dynamical stability. So write down
Write down a paragraph on dynamical stability. So will you please repeat again? DS is dynamical stability. So write down a paragraph on dynamical stability. DS राइट डाउन क्या क्या बोला आपने? मैंने कहा अब मैं बोल रहा हूँ डायनामिकल स्टेबिलिटी के बारे में एक पैराग्राफ, तो ओके, वो राइट डाउन लिख लो, पैराग्राफ. वो लिख लो. DS is the amount of work done DS is the amount of work done in bringing a ship to the required angle of heel. DS is the amount of work done in bringing a ship to the required angle of heel. Numerically, it is equal to product of displacement and area under the curve and area under the curve up to that theta. So can you please repeat? It is the numerical. It is product of displacement and Numerically, it is a product of displacement and area under the curve up to that theta. Its units are ton meter radian. Its units are ton meter radian. It is used in damage stability calculations. It is used in damage stability calculations. सर एक बारी लास्ट लाइन बोलेंगे? It is used in damage stability calculations. It is used in damage stability calculations.
So basically, what I'm trying to say is that if the vessel has got damaged, let's say this vessel has got damaged on the starboard side, because of which bilging has occurred, ingress of water has happened. So, because water has entered in from the starboard side, so consequently, she has taken a heel over onto this side. So, the amount of work done in bringing the ship from this upright to, let's say, 30 degrees, जितना इस जहाज ने काम किया, that is the work done, उतना मुझे वर्क इस जहाज पे करना पड़ेगा to bring this vessel back to operate. So the amount of work done to bring this vessel back to upright from 30 degrees will be so many TMR. That will be the dynamical stability of this ship for this condition. So this work done, I can do it in 3 ways. तीन तरीके से मैं कर सकता हूं. नंबर 1, मैं स्टार्बोर्ड साइड से डीबैलेस्ट कर लूं, तो आई एम डूइंग वर्क, मैं काम कर रहा हूं. मैंने स्टार्बोर्ड साइड से डीबैलेस्टिंग कर ली. 2, मैं पोर्ट साइड पे बैलेस्ट कर लेता हूं, तो भी मैं वर्क डन कर रहा हूं. और तीसरा, मैं स्टार्बोर्ड से पोर्ट ट्रांसफर कर देता हूं बैलेस्ट को, तो भी मैं वर्क डन कर रहा हूं. तो ये 3 मेरे हो गए इंटरनल वर्क डन, यानी कि मैं जहाज पे काम कर रहा हूं. यही काम मैं एक्सटर्नली भी कर सकता हूं. मैं टग को बुलाता हूं और टग को बोलता हूं कि यहां से पुश कर भैया मुझे, तो ये मुझे पुश करता है और मैं सीधा हो जाता हूं. दैट इज एन एक्सटर्नल वर्क डन. सिमिलरली मैं टग को बुलाता हूं, वो यहां से मुझे रस्सी बांधता है, ये खींचता है, मैं सीधा हो जाता हूं. ये भी एक्सटर्नल वर्क है. इसी तरीके से विंड, करंट, मेट्रोलॉजिकल वेदर जितने भी हैं, वो सब मुझे यहां से मारते हैं, एक्सटर्नली मार रहे हैं. सो ये भी एक्सटर्नल वर्क डन है. सो वर्क डन कैन बी एक्सटर्नल, वर्क डन कैन बी इंटरनल. So these are the various ways in which I can do work and bring the vessel upright. So ये 8 चीजें हैं जिससे कि मुझे GZ कर्व से इंफॉर्मेशन मिल सकती है. और ये 8 की 8 चीजें कंप्राइज करती हैं what is called as intact stability of the ship. ये intact stability कहलाती है कि wherever we say, and ये 8 की 8 इंपॉर्टेंट है to determine intact stability of the ship. So any doubts so far? सर ये इंटैक्ट स्टेबिलिटी मतलब जो ये एक्सटर्नल फैक्टर है उनको बोल रहे हैं या ये सारे 8 फैक्टर्स जो हैं वो हैं? ये सारे 8 हैं जो 8 लिखे हैं ना हमने, ये 8 के 8.
All 8. ठीक है? Is that okay? Yes, sir. So now write down one question. Theory wala. The GM of a vessel is the single most important factor in determining the stability of a ship. Do you agree with the above statement? Do you के बाद Do you agree with the above statement? Justify your answer. Justify your answer giving reasons. Anji, what would be your answer? Do you agree with the above statement? Do you agree with the above statement? No, sir. Why not? Sir, ये statical stability is also very important, sir. क्योंकि ropes will tell you कि कितनी range तक हमारी stability रहेगी. Let alone भी कि कितना अगर कम है उसकी range, तो you will be easily listed over. अगर ज़्यादा है तो it will take more force to list you. Anji, anybody else? कोई और आंसर? So basically, is GM the single most deciding factor? That's the question. Firstly, you have to answer that. Then you have to justify. So क्या GM single most important या deciding factor है जो stability को determine करता है जहाज की? जीएम ही नहीं है सर, शेयरिंग फोर्स भी है, बीएम है और सब भी तो आता है। कहाँ चले गए? कहाँ शेयरिंग फोर्स पे पहुंच गए? कहाँ बेंडिंग मोमेंट में पहुंच गए? वो तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है। सर वो जीएम तो
जीएम ही है सर जो डिसाइडिंग है, बिकॉज इट विल डिसाइड, ये इससे रिफ्लेक्ट होता है दैट इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। सर बट देन वो राइटिंग मोमेंट जो है वो तो जीजेड पे है, तो फिर वो फोर्स तो वो डिसाइड कर दिया नहीं। जी जीजेड भी तो सर जब अनस्टेबल में होगी तभी तो आएगा सर। अगर जीएम पॉजिटिव है तो दैट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, तब राइटिंग लीवर का इतना इफेक्ट नहीं होगा ना। क्वेश्चन को जब भी डाउट आ जाए ना तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। तो ये अगर होता तो ये क्वेश्चन ही नहीं पूछता, पहली बात तो। तो क्योंकि वो क्वेश्चन आया है तो इसका मतलब है कुछ कारण है, नहीं तो क्वेश्चन ही ना पूछते। सही बात है। अब वो क्वेश्चन आया है सर घूमता, ये रीजन थोड़ी लिख सकते हैं सर कि वो क्वेश्चन नहीं पूछता तो ये आया है, तो मतलब ऐसे होगा। लेकिन दिमाग में तो आना चाहिए ना ये बात। दिमाग में तो ये आनी चाहिए। अब ये थोड़ी कि आप डालोगे स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, किसी ने बोल दिया, उसने बोला कि शेयरिंग फोर्स बेंडिंग मोमेंट। अब मैं मतलब मैं सारी चीजें अपनी जितनी मेरी नॉलेज है मैं सारी की सारी चेप दूं एक क्वेश्चन पे, तो वो जस्टिफाई तो नहीं कर रही ना। 12 सर ये नंबर या जितने जितने सामने मेरे वाले को क्वेश्चन। कंफ्यूज करने के प्रिंसिपल पर काम हो रहा है सर यहाँ पे। अब वो क्वेश्चन ये है कि आपका फर्ज है कि आप कंफ्यूज ना हो और आप उसको लेके जाओ उसी दिशा में जिस दिशा में आप चाहते हो। तो क्वेश्चन कहता है कि सिंगल मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर है क्या जीएम। सिंगल मोस्ट मतलब कोई और होना ही नहीं चाहिए, खाली वो जीएम ही हो इकलौता और बाकी कोई ना हो। तो सबसे पहली बात तो ये सोचनी है। तो अभी हमने बोला था थोड़ी देर पहले कि 8 चीजें होती हैं जो डिटरमिन करती हैं स्टेबिलिटी ऑफ शिप। जीएम हैपेंस टू बी वन आउट ऑफ दोज 8। 7 और भी हैं जो स्टेबिलिटी को डिफाइन करती हैं। उसमें आरओपीएस भी है, वैनिशिंग भी है, जीजेड मैक्स भी है, एरिया भी है, राइटिंग मोमेंट भी है। सब कुछ है वो सारे जितने हमने लिखे 7 बाकी। तो वो सब भी तो हैं जो स्टेबिलिटी डिटरमिन करती हैं। तो क्या जीएम सिंगल मोस्ट अकेली इकलौती डिसाइडिंग फैक्टर है? द आंसर इज नो। सो योर आंसर विल बी नो, GM is not the single most deciding factor in determining the stability of a ship. There are 7 other factors also. And then you will give this whole answer. You will draw the curve. You will write down all the 8 points. वो क्या करते हैं, क्या क्या है, वो सारी राम कहानी ये 8 की लिखोगे। ये आपके 15 नंबर का सवाल है या 12 नंबर का सवाल है। और फिर 12 नंबर आपके पॉकेट में। ठीक है, इज दैट ओके? समझ आ गया? एनी डाउट? Yes, sir. बेसिकली जो हम क्लास में कर रहे हैं वही उसी पे सवाल पूछूंगा ना। मैं किसी और पे तो मैं सर एसएफबीएम पे तो जाऊंगा नहीं। जैसे जीजेड मैक्स है वो तो हमें चलो एक क्राइटेरिया हो गया कि जीजेड मैक्स आपका जो करेक्टेड जीजेड है वो ज्यादा होना चाहिए, बट उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है एंगल ऑफ हील, तो इसका क्या रेलेवेंसी होगी? अगर वो तो जीजेड ज्यादा है तो मतलब एंगल ऑफ हील से क्या पता चलेगा स्टेबिलिटी में कि कितने एंगल पे हील होगी, 40 आ रहा है या 30 आ रहा है? जीजेड मैक्स किस एंगल पे पहुंच रहा है? अगर मेरा जीजेड मैक्स
इसलिए मैंने शुरू में बोल दिया बेल शेप्ड कर्व। घंटी बजनी चाहिए, बेल होनी चाहिए। अगर बेल है तो मैं ओके हूं। अगर मेरा जीजेड मैक्स पहले पहुंच जाता है तो मेरा कर्व ऐसा हो जाएगा, will I be able to reach, will I be able to achieve एरिया, मेरी वैनिशिंग कम हो गई, मेरी आरओपीएस कम हो गई। सो ओके सर। बेसिकली अगर मेरा कर्व ऐसे होगा तो ये इस जहाज का जो मेरा जीएम की वैल्यू है वो यहाँ पे ऐसे करके ऐसे आएगा। मतलब जीएम, दिस विल बी अ हाई जीएम वेसल, यानी कि स्टिफ वेसल। ये स्टिफ वेसल का कर्व है। सिमिलरली अगर मेरा जीजेड कर्व यूं बनता है तो इसकी मेरी जीएम लो होगी। ये मेरा टेंडर वेसल है, मुझे स्टिफ भी नहीं चाहिए, मुझे टेंडर भी नहीं चाहिए, मुझे दोनों के बीच का चाहिए ताकि वो बेल बने, विच विल बी टू स्टिफ नॉट टू टेंडर। सो ये भी नहीं हो सकता, इसलिए वो एंगल ऑफ हील एट जीजेड मैक्स, वो उसकी अहमियत आ गई। ठीक है, इज दैट ओके? ओके सर। प्लस सर फिर यूं भी हो जाएगा कि अगर 20 डिग्री लेट्स से ऐसा हो कि 15 डिग्री पे जीजेड मैक्स आ गई, और तो फिर इसका मतलब अगर 15 से ज्यादा लिस्ट होती जाएगी तो फिर हम ज्यादा मतलब उसमें जाते जाएंगे कि हमारे पास कुछ हाथ में पॉजिटिव रहेगा नहीं, फिर इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग ऐसा। बेसिकली दी फॉर एवरी फैक्टर और क्राइटेरिया, या एवरी फैक्टर जो हमने लिखे 8, उसकी अपनी अपनी अहमियत है। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि जीएम से ही मेरी खाली स्टेबिलिटी डिफाइन होती है। तो जब हमने सेगमेंट्स और प्रीसी करी तो हमें सिखाया गया कि जीएम बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक फैक्टर हमें बता दिया गया। अब हम फेज 1 में पहुंचे, अब 7 फैक्टर और घुसा दिए, अब 8 फैक्टर हो गए कि भैया 8 फैक्टर हैं जो स्टेबिलिटी को डिफाइन कर रहे हैं। फिर हम फेज 2 में जाएंगे, फिर कुछ एक दो और घुसा देंगे, फिर हम मास्टर्स में जाएंगे, फिर वहां पे भी थोड़े से और डाल देंगे। ऐसे करते करते हमारे फैक्टर्स बढ़ते जाएंगे जो हमारी स्टेबिलिटी को डिफाइन कर रहे हैं। तो बेसिकली ये हो रहा है। सर हमने यूं भी लिखना पड़ेगा कि आंसर में कि क्या कैसे अफेक्ट कर रहा है, जैसे जीजेड इट इज अफेक्टिंग, बट कैसे जीजेड मैक्स होएगा तो बढ़िया स्टेबिलिटी है, एरिया अंडर द कर्व अगर ज्यादा है तो फिर ज्यादा स्टेबल कुछ होएगा। नहीं, नहीं 12 नंबर का सवाल है, आपके पास 12 मिनट है। 12 मिनट में क्या क्या कर सकते हो अब आप डिसाइड डिसाइड कर लो। तो यही कर लो, बहुत गनीमत है। कर्व बना लो, ओके सर। है ना, 8 पॉइंट लिख लो, और वो 8 पॉइंट क्या करते हैं बस ये जो हमने क्लास में किया बस वही उतना कर लो, 12 नंबर मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा जितना टाइम स्पेंड करोगे तो आप क्रीज पे एक्स्ट्रा टाइम लगा रहे हो और रन कुछ मिल नहीं रहे आपको, और आप बॉल्स भी गवा रहे हो। वो वाला हाल है। से कर्व के हिसाब से जो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज दैट वी पुट वो भी लिखनी है या फिर ओनली द पॉइंट्स? हाँ, यू पुट योर दोज अप्रोक्सीमेट वैल्यूज जो हमने डाली हैं, ताकि ताकि यू गिव एन आइडिया अबाउट दी वैल्यूज ऑल्सो। बट वो इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट, लाइक मैंने 80 लिखा है, आप 79 लिख देना, कोई 85 लिख देगा, इट्स ओके, दैट डजंट मैटर। बट
एक्स एक्सिस का जो डिनोमिनेशन है वो 10, 20, 30, 45, 60, 75 वो वही रहेगा एक्स एक्सिस की डिनोमिनेशन. बाकी रेस्ट एवरी वैल्यू विल चेंज. ठीक है, इज दैट ओके? So just about the angle of vanishing stability, that was the angle between x-axis and. No, it was the point at which the GZ curve cuts the x-axis. Okay. Okay, sir. Yeah. सर ये वाला क्वेश्चन भी 2-3 बार आ रखा था. इसमें एक बार तो सीधा यूं लिख रखा था कि GM इज नॉट द ओनली इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया एक्सप्लेन. तो उसमें तो वो पूछ भी नहीं रखा था कि भाई सोचो. तो सोचो. सर हाँ जी. तो सर ये आपने सर ऐसे जो ऐसे लिखवा रखा है सर, ये बहुत ही सही. अब एक बार डिस्कशन हुई थी सर हमारी की वो बाकी 10-12 ही क्वेश्चन है. तो सर वो हम आपको ड्राफ्ट करके भेज दें सर कि क्या क्या है, कि उसका आप एक बार कह रहे थे ना कि आप आंसर्स बना के दे दोगे. कौन से वाले? मतलब समझ नहीं आया मुझे. सर जो थ्योरी के क्वेश्चंस हैं सर, जो हाँ भेज दो. ठीक है सर. भेज आई दो. मेक अ लिस्ट एंड भेज आई दो. विल सेंड इट द ग्रुप सर. ठीक है, इनके आंसर्स. क्योंकि सर जो ये वाला आंसर है ना सर, ये हम कितना भी पढ़ लें सर, हम जिंदगी में ऐसा नहीं बना सकते जैसा आपने बनवाया है सर. ये ऐसा कुछ नहीं है. बेसिकली उसको सिंप्लीफाई कर दिया और कुछ नहीं है. नथिंग एल्स. यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द टाइम लिमिट. अब 12 मिनट में क्या क्या कर सकते हो? जो कुछ कर सकते हो बस उतना ही है. हाँ जी सर. प्लस 10 जितने ग्राफ होते हैं सर उतना ही इफेक्टिव सा लगने लगता है सर. बस. या ओके. नाउ चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे. नेक्स्ट फिर लंबा खींचेगा. ऑल राइट. ठीक है, चलो सी यू टुमारो देन. ऑल राइट. ओके बाय. Okay, thank you, Bye sir. bye, sir. बहुत